देखिए, मेरा मानना ये है कि इंस्टीट्यूट का भी एक रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के टाइम पे पढ़ना आप ही को है। कुछ भी हो जाए, पढ़ना आप ही को है, लिखना भी आप ही को है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और रही बात स्टडी मटेरियल का, एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट। देखिए ना, बैचेस कितने बड़े बड़े होते हैं। देयर आर 600 का एक ही बैचेस होते हैं, देयर आर 10 बैचेस चल रहे हैं। अब उसमें से पूरे 600 के बैच में एक बंदे का सिलेक्शन हो रहा है। तो दैट डजंट मीन सक्सेस, दैट इज अ फेलियर थिंग। बेसिक इन द सेंस कि आपके में स्पेशली इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरमेंट, ये तीन कोर सब्जेक्ट्स है। अगर आप इन तीन कोर सब्जेक्ट्स को उठा लीजिए, यू विल गेट एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थ्री। Hello and welcome to Captain Squad. This is Vishal, and today we have with us Debjyoti Barman, sir. Sir, first of all, welcome to Captain Squad. Thank you, thank you. I think it's my privilege that I'm here, and it's great. I think you are doing a great job. You have been motivating such large number of students, and it's always pleasure to talk to the new generation, who are just part of me only. So it's great. Thank you, sir, and especially thanks to you for your time because you have taken out your time from your busy schedule. Thank you very much for that once again. So, Most sir, welcome. basically today we will discuss about UPSC Civil Services Examination. So, firstly, I would like to tell our viewers that sir is basically IR 2018 batch of UPSC Civil Services Examination. Sir, I would like you to tell us about your educational background. I am graduate in medical sciences. I am a doctor. I did my graduation from Maulana Azad Medical College. Before that, I had my father was in Indian Air Force, so I had a defense background in which I used to move around. So I have studied in Air Force Bal Bharti School. Apart from that, I have studied did my schooling from Kendriya Vidyalayas. So it has been a great mix of good schools, and I've been around Delhi, then Bangalore, Bareilly, Hindon, and Kolkata, of course, in the last. So this is what I had in the education background. After that, after doing my MBBS, I got into PG also, but I didn't choose to go there. Rather, I focused on UPSC, and finally, I'm here. Sir, I would ask you that being an aspirant myself, सबसे पहला question जो मेरे mind में आ रहा है that as you told that you are from the medical background. So why did you switch from medical background? And as far as I know, that Maulana Azad College is a very much reputed college. Means it's a dream for many of the medical students to even have a admission there. So why did you switch from medical line to UPSC Civil Service? Yes, Maulana Azad is always a dream college for any medical aspirant, and I've been very lucky to get into that college, and it has been a fantastic period of study there, and I really enjoyed being a doctor. It was a great experience, and the kind of satisfaction you get being a doctor is immense. But there is one part which everybody asks, that why did I switch from medical to this part? During my internship period, I had a feeling that yes, I was treating a lot many patients, but most of the problems that people faced was not the disease exactly, but the other social factors which were creating the massive issues. For example, poverty, or for even in girl childs, if you see the stats, the percentage of anemia in women is more than 50%. So
we are having a country which is developing, and we are still uh, in many factors we are in very poor state. So I thought that why not diversify my horizons, and hence this was one of the fields which was proposed to me, and I happened to like it very much at the outset, and I thought why not give it a try. So luckily I got into it. Had it not been this, I would have continued as a medical in the medical field as a doctor. But yes, I feel that both medical as well as there are many services. For example, the education, teachers, doctors. I think everybody is contributing immensely to the society, and this is one of the places where I chose to contribute, and that's the story behind it. Okay. So yeah, that's the means everybody is playing their part in the society, be it the doctors or the teachers or the civil servants as well. So, sir, Yes. next question I would like to ask you that in which year, sir, you started preparing for civil services examination? I completed my internship in 2017. So in 2017, I started just after my internship. I started at I'll say the date also on 23rd February. I started my preparation in 2017, and since then I have did it in a very streamlined manner. In the first prelims, I could not clear it by two questions, and So I that was was in I was 2017. yeah, 2017 was my first attempt. So I had around 4 months of study, and I missed prelims by around two questions. So I was okay. I was like, okay, that it's a good effort that I have made. And after that, I prepared wholly for the mains because I knew that I am very close to the prelims. Now I had that confidence that I'll clear prelims the next time. So I had a very integrated study in which I focused more on the mains aspect, and for the next prelims, I did my prelims preparation just I think 2 3 months back, and I was okay with it. I got a good marks. Like I got around 20 25 marks more than the cutoff. So it was good for me. Sir, did you take any coaching for the preparation? No, I didn't take any coaching per se. What I did is I did took help of the mains test series which was provided. I joined one of the reputed mains test series, and that is all I joined for, and no other coaching, nothing, because I personally felt that I'm that kind of a student who likes to study in his own way, not dictated by anybody. I want my space in my studies. Okay, sir. So this is a very common question among the aspirants that whether or not to join the institutes for the civil services preparation, not only for civil services preparation, be it any other examinations as well. Sir, how would you tell? मतलब आपके according क्या होना चाहिए parameters for someone to join or not to join the institutes? अ, देखिए, मेरा मानना ये है कि इंस्टीट्यूट का भी एक रोल है। मतलब इंस्टीट्यूट का रोल आपको गाइडेंस करने का है। अगर आपके पास वो गाइडेंस है, लाइक फॉर मी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे इमीडिएट सीनियर्स थे जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है, खुद आईएएस बने हुए थे। तो आई हैड दैट गाइडेंस। मैं कभी भी होता था, मैं अपने सीनियर से पूछ लेता था कि सर ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये करना है, नहीं करना है। दैट काइंड ऑफ गाइडेंस अगर आपके पास है, मेरे को लगता है आज के टाइम पे यूट्यूब में लगभग लगभग हर टॉपर ने अपनी गाइडेंसेस दिए हुए हैं, बट फिर भी थोड़ा एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है थोड़ी बहुत। दैट इज द ओनली रोल आई फील कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कम इनटू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के टाइम पे पढ़ना आप ही को है। कुछ भी हो जाए, पढ़ना आप ही को है, लिखना भी आप ही को है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और रही बात स्टडी मटेरियल का, एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट। हर चीज आपको फ्री में मिल सकता है आज के टाइम पे। एवरी मटेरियल इज देयर, रादर इट इज ओवरलोडेड। तो आपको सेलेक्ट चूज करना पड़ेगा कि क्या मटेरियल आप पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मेरा मानना है कि इफ यू आर अ फोकस्ड पर्सन एंड यू डोंट गो बाय द मैड रेस, क्योंकि मेरा मानना है कि एक क्राउड की तरह भेड़ चाल है बेसिकली। एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू कोचिंग एंड इट्स काइंड ऑफ अ स्टाइल स्टेटमेंट। मेरा मेरा मानना ये है। और जो आप टॉपर्स टॉक देखते हैं, वो टॉपर्स बनने के बाद टॉक
देने आते हैं. Many of them have not even enrolled for these coaching institutes for which they come and speak for. तो ये बस ये होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे they come and take those interview sessions, या फिर take my case, I just took the main test series. Yes, that helped me, but I did the entire regular coaching. It is a classroom So program you can, जिसे बोलते हैं. या क्लासरूम प्रोग्राम. और मेरा मानना ये कि दो एस्पेक्ट है. एक तो एस्पेक्ट है कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट कोचिंग. आप कोचिंग कर रहे हो तो फिर आप पूरे टाइम उसमें डेडिकेटेड होते हैं. सेकेंड चीज होती है कि द प्रॉब्लम विद मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कि वो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते टाइम से. थर्ड होता है कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है रादर देन योर ओन थिंग. आप उसके पेस से चलते हैं रादर देन अपने पेस से. वो भी एक एस्पेक्ट होता है. सपोज आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो यू नीड वेरी लेस टाइम टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी. आपको 10 दिन में आप समझ सकते हैं, बट वहां पे क्लासेस एक महीना चल रहा है, तो दैट हैम्पर्स योर स्टडी. बट आपको हिस्ट्री में ज्यादा टाइम चाहिए, 40 दिन चाहिए, बट वहां पे 20 दिन में हिस्ट्री खत्म हो रहा है, तो दैट हैम्पर्स योर टाइम. सो कहीं ना कहीं वो पर्सनलाइज्ड मेथड नहीं हो पाता. तो तो बेसिकली सर मतलब आप जो कहना चाहते हैं कि हर एक का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक वीक पॉइंट है. बट इंस्टीट्यूट जो होते हैं दे टीच ऑन अ व्हाट टू से, मतलब सबको लेके दे टीच बिकॉज दे डोंट नो हु इज वीक इन हिस्ट्री और मे बी हु इज गुड एट मैथ्स, समथिंग लाइक दिस. एग्जैक्टली. आप देखिए ना, बैचेस कितने बड़े बड़े होते हैं. देयर आर 600 का एक ही बैचेस होता है. देयर आर 10 बैचेस चल रहे हैं. अब उसमें से पूरे 600 के बैच में एक बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, तो दैट डजंट मीन सक्सेस. दैट इज अ फेलियर थिंग दैट आपके 600 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन हो रहा है. तो पीपल हैव टू फोकस ऑन दैट. एंड कहीं ना कहीं इट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. आप जब कोचिंग जाते हैं, एक तो एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ह्यूज है. I don't think that everybody is capable enough to pay up that huge sum of money. आज के टाइम पे 1.5-2 लाख के करीब करीब कोचिंग के प्राइसेस चले गए हैं. सेकेंडली, आप वहीं पे उस एरिया में रहते हैं, रहने का, खाने का, देयर इज हेल लॉट ऑफ प्रेशर्स. सो माय सजेशन विल बी, अगर आपके पास वो गाइडेंस है, इफ देयर इज समबडी हु कैन हेल्प यू आउट विद द गाइडेंस, then stay at home and study yourself. There's no need to go to any coaching institute. सो क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो टफेस्ट फेज होते हैं एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं टू एसेस देमसेल्व्स. तो सर इसके लिए आपने फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, यू आर डूइंग द एमसीक्यू प्रिपरेशन उसके लिए, एंड फॉर आल्सो फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट. तो उसको सर आपने किस तरह से एसेस किया? मेरा मानना ये है कि हाउ टू एसेस योरसेल्फ, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक अपने आप को एसेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने आप को नहीं एसेस कर पाएंगे तो आप कैसे मतलब आगे भी कैसे बढ़ेंगे. एंड दैट इज वेयर टेस्ट सीरीज कम्स इनटू प्ले. अब उसको भी आप एक तरीके से एसेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मॉक एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है. मॉक एमसीक्यूज से आपको एक आइडिया लग रहा है कि एवरीबडी स्टार्ट्स विथ वेरी लो स्कोर. हर बंदा पहले में ही एकदम तोप नहीं होता, मतलब आती सब सिक्सर नहीं मारते. सब पहले बॉल्स डिफेंड करते, पिच देखते हैं कि कैसा पिच है, कैसा स्विंग हो रहा है, कैसी फील्ड सेटिंग है. एटलीस्ट यू स्टे ऑन द क्रीज फर्स्ट एंड देन यू प्ले. तो इनिशियल आप देखें कि कैसा है, ठीक है. उसके लिए इनिशियली एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. आप टेस्ट सीरीज दीजिए, लिखिए, देन यू विल एनालाइज कि हाँ यार, यहाँ पे आई एम लैकिंग अ लॉट. प्रीलिम्स में आई थिंक प्रीलिम्स में इनिशियली व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट. पहले एक आइडिया होता था कि आप 50 टेस्ट सीरीज लगाए, 60 टेस्ट सीरीज लगाए तो क्वेश्चन कॉमन आ जाते थे. आज के टाइम पे आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज इफ यू गो बाय लास्ट 2 years पेपर्स, स्पेशली इस साल का पेपर, तो यू रियलाइज दैट आप कितने भी टेस्ट सीरीज लगा दे, आपके क्वेश्चन कॉमन नहीं आएंगे. सो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. तो यू शुड aspire for something like that. What you should aspire in prelims, particularly in prelims, कि मुझे ये लगता है कि you should aspire for basic things. Basic in the sense कि आपके में स्पेशली इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये 3 कोर सब्जेक्ट्स है. अगर आप इन 3 कोर सब्जेक्ट्स को उठा लीजिए, यू विल गेट एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3. अब आपका इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी है, these 2 are very basic, very starting. Generally it is very static.
So if you have base, very good understanding of economics, very good understanding of polity, you'll definitely get good marks. ठीक है, और एनवायरमेंट आप फिर उसमें सप्लीमेंट करिए, एनवायरमेंट में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं हर एस्पिरेंट को यही बोलूंगा कि डोंट क्या बोले उसको, अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, आई कैन डेफिनेटली गिव यू विद कन्विक्शन दैट कि आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चंस वहां से निकलने वाले, either the direct question or there will be a option which will be repeated. There are many questions, इस साल भी ऐसा हुआ है कि there are 2 or 3 questions जो direct repeat है, ऐसा भी नहीं कि अलग हुआ है, the same question has got repeated. So अगर if you're missing on those things तो आप, it's a big loss I think, because every serious aspirant is focusing on them. तो लास्ट 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वैसे आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं। सेकंड, मेंस टेस्ट सीरीज। मेंस टेस्ट सीरीज लिखना जरूरी है। क्यों मेन टेस्ट सीरीज? क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं। 20 सवाल मतलब मैं आपको आगे और ब्रेक डाउन करके बताऊंगा द न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। सो आई थिंक आई विल फॉर गो विथ दिस आंसर ओनली, बाद में मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बता दूंगा। हाँ श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट जैसे आपने बोला कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, सो सर बेसिकली व्हाट वाज योर बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड आपने एक इंटीग्रेटेड वे में इस एग्जाम को मतलब अप्रोच कैसे किया? देखिए मतलब आई वुड टेल फ्रॉम माय मिस्टेक्स। हर इंसान ये मिस्टेक्स करेगा, एंड आई थिंक दैट लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू ऑल द मिस्टेक्स योरसेल्फ। कभी कभार जो मिस्टेक्स हम कर चुके हैं, यू डोंट रिपीट दैट। तो मेरा मानना है कि पहली मिस्टेक ये है कि आप जब करंट अफेयर करिए तो डोंट गिव टू मच एम्फोसिस ऑन करंट अफेयर, कि पूरे दिन से 5-6 घंटे करंट अफेयर कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट्स में किए हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर उसके नोट्स बन रहे हैं, फिर उसमें से पता नहीं क्या क्या अलग अलग फाइल्स बन रहे हैं कि ये इकोनॉमी का फाइल है, इसमें नोट बन रहे हैं, एनवायरमेंट का फाइल अलग है, उसमें नोट्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो पे ऑफ करता है। उससे स्मार्टर स्ट्रैटेजी ये है कि आप, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट जो मंथली मैगजीन्स निकाल रही है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑफ इट कि इतने मंथली मैगजीन्स आ रहे हैं। तो उनके पास एक 6-7 वेरी स्टूडियस पीपल का एक टीम है, वो आर मेकिंग वेरी गुड नोट्स, एंड आई थिंक आप वो नोट्स लीजिए, पूरे महीने का आपके पास करंट अफेयर वहीं से आ गया। आप न्यूज़पेपर को बस ब्रश करिए, मतलब जस्ट गो थ्रू इट, सो दैट जब आप मंथ के एंड में वो करंट अफेयर मटेरियल पढ़ेंगे तो इट विल गेट अब्सॉर्ब वेरी इजीली। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो डोंट वेस्ट मोर देन एन आवर इन न्यूज़पेपर। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज। सर डिड यू मेक notes सेकंड of, चीज, sorry sir, I'm interrupting you, sir. I was asking that श्योर श्योर। yes sir, so I was asking you that did you make notes out of the newspaper reading? I did in the first few attempts. I did, but in the recent attempt and the previous attempt, I didn't. मेरे को लगता है कि I waste a lot of time in that, and it's not even necessary. It's really not necessary. हाँ, कुछ एक आध चीज अब ऊपर नीचे आ गया, something very interesting you find, you can note down in your mains, like the static नोट्स दैट यू हैव मेड, उसी में आप नोट डाउन करिए। बट अलग से जो नोट्स आप बना रहे हैं, उस करंट अफेयर का अलग से नोट, आई थिंक दैट इज वेरी यूजलेस, यू really don't need. And so which newspaper you followed? See, initially I followed the Hindu. So in the first attempt I did follow Hindu, but then I felt, मतलब ये मेरा personal opinion है, I think many will agree with me or may disagree also with, it's okay, but I felt that that newspaper has a very left tilt, so I was becoming very anti-governmental points were getting raised again and again. But you won't clear this exam by writing anti-governmental things. I think it's a balanced opinion that as a civil servant you need to have a very balanced opinion. So I started reading the Indian Express, and I find that the editorial was well balanced. There were on the same topic there were pros also, there were cons also.
I think in the recent editions of the Hindu, they have also included that there is the left opinion, right opinion, and central opinion. So I think you make an opinion, have a very unbiased opinion, and see it through the middle path. I think that one should do. Irrespective of कुछ भी हो, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए. It really doesn't make much of a difference. क्योंकि कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएगा. सर मतलब व्हाट डू यू मीन इज बेसिकली आंसर राइटिंग में भी we have to basically write the answers in a balanced way because we have to end of the day हमें तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करना है and we don't have to become journalist कि just मतलब एग्जैक्टली. criticize ही करना है. देखिए, क्रिटिसिज्म भी आई थिंक इट शुड बी आई थिंक एक्टिव Constructive criticism. क्रिटिसिज्म. हाँ, एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि उसके हर प्रोग्राम के कुछ प्रोस तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ. मतलब योर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर आई थिंक वेल लर्नड आल्सो, एंड दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. They have got a lot of knowledge base which is coming through and giving a policy idea. So it can't be all bad. सो कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा ओपिनियन को. यू जस्ट कांट गो एंड बैशिंग द गवर्नमेंट. देयर हैज टू बी अ बैलेंस्ड ओपिनियन कि yes, these are the lacunae and these are the positives, and how that is the role of a bureaucrat, that you have to actually improve the policy over time and get I think iron out the various creases that come along. So sir, back to the point I was asking you regarding the book list basically. Sir, आपने basically कौन से books follow किए थे for the basic subjects like history and geography and polity? I think it's a very simple answer. It's the starting books जो सब पढ़ते हैं वही किताबें हैं. Don't go. My only advice will be don't go for lot many books. जैसे I would say जैसे geography आप पढ़ रहे हैं. अब geography में NCERTs are very good. The only subject where I find that NCERTs are really good and sufficient is geography. तो आप geography के अगर आप 9 to 12 पढ़ लेते हैं, आई थिंक यू डोंट नीड मच. उसके बाद हाँ, जैसे जीसी लियोंग है, जीसी लियोंग में क्लाइमेटोलॉजी पार्ट इज वेरी गुड, तो आप वहां से क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट पढ़ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है. हाँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशंस. अगर आप सिलेबस को निकालेंगे तो उसमें देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट इंडस्ट्रियल लोकेशन, इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन, ज्योग्राफी ऑन इंडस्ट्रीज, और ये सारे जो एस्पेक्ट्स है उसके लिए आप इंटरनेट गूगल करिए. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स व्हिच आर गिविंग वेरी स्पेसिफिक नोट्स अबाउट इट. तो वहां से आप उसको कवर करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतनी इतनी किताबें पढ़ते हैं, माजिद हुसैन, खुल्लर, पता नहीं, आई रियली डोंट नो कि इतनी किताबें पढ़ के कैसे याद रखते हैं. मतलब हैट्स ऑफ टू देम, बट इट्स रियली नॉट रिक्वायर्ड. बिकॉज वही है कि आप एग्जाम में इतना लिख ही नहीं सकते. मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड राइट सो मच. Because तो we have इतनी such लिबर्टी है नहीं अब. मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल मेंस में भी we have limited time. मतलब उसमें we have to attend 20 questions, so that's I'll already a challenging task. break I'll break up that. Since you That's told about that, I'll break up the statistics about it. It's a very important. I think the aspirants, one part that aspirants should realize is this part which I'm saying. I think the key nerve of this exam. See, you have 20 questions you have to write in three hours. That is 180 minutes. Okay, so 180 minutes, 20 questions, and you have 10 questions, 10 marker, and 10 questions, 15 marker. So 10 question, 10 marker, you have to write in 150 words, and 10 questions, 15 marker, you have to write in 250 words. So 2500 words plus here 1500 words, that is 4000 words. So you have to write 4000 words in 180 minutes. That counts out to be more than 20 words per minute. If any aspirant wants to write 20 words per minute, just I really would advise all the aspirants to write 20 words in 1 minute. They will realize how fast you have to write. exactly. Okay, and that I'm excluding that. In that time you have to, one, read the question, understand the question, and then make points, and then you have to think and write. So just imagine the
time shortage you have. So you have to be very focused in that. If you don't realize it, no matter kitna bhi aapko knowledge bhara hua, you just won't be able to write it. So that is the whole crux of this game. That uh, if you ask me what is the crux of this game is that like once you're preparing, it's a test match. Like you are preparing for 1.5 years minimum. So it's a game of patience. You have to prepare throughout. But once you are writing the mains, it is a game of T20, because morning, evening you have to write 6 hours, again next day. So 3 consecutive days you have to write. And in that, every paper you have 180 minutes in which you have to fill your OMR, that I think attendance sheet, which is a Yeah, OMR sheet, if anybody has written means. So you will lose out 5 minutes in that. So you just have 175 minutes. So if you do the calculation, you have to write more than 20 words in a minute. And it is a that's a really challenging difficult job task. to do. Yeah, and because sir, That is the just most. because sir, sorry sir to interrupt you, sir, Yeah, because yeah, sir हमें तो सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, we have to even think and frame it, because exactly. I think perfect or not perfect, but framing is also necessary, and a conclusion based because conclusion is very much also, I think, essential to conclude any of the answers. So ये सब करना is True. itself a challenging task, and that to the time is there is always a time shortage there. Exactly. So every minute will matter a lot. So it's my only experience that I feel that it's matlab like every student has to keep this in mind. Every time they study na, they have to keep this in mind. कि यार एक answer मुझे, if I break it down, you just have 7 minutes to attempt that 10 mark का question. तो आपको 7 मिनट में वो 10 mark का question लिखना है. तो आपको जब 7 मिनट में वो 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, तो आप ये सोचिए कि आपके पास 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, 1-1.5 मिनट का कंक्लूजन है, और बाकी बीच के 4 मिनट का आपके पास मेन कंटेंट है. अब जब आप 4 मिनट में कंटेंट लिख रही है, जस्ट इमेजिन द quality of that content. So that content has to be so concise and so perfect आपके ब्रेन में कि you write the best points. क्योंकि अगर आप पूरा माजिद हुसैन और खुल्लर और ये पता नहीं क्या किताब पढ़ के जाएंगे, तो आप जब वो पूरा ज्ञान उसमें कंसंट्रेट करेंगे, वो आएगा ही नहीं उतने कम आएगा टाइम नहीं। में, और जब तक आएगा ट्रेन छूट जाएगी. तो दैट वोंट हेल्प यू आउट. इट्स, देखिए, एक चीज होती है कि नॉलेज गेन करना, यस नॉलेज गेन करना है, बट एग्जाम में नॉलेज गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करना है. आप एग्जाम क्रैक करिए, फिर पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहिए, नो बडी बॉदर्स. आपके पास पूरी जिंदगी याद करने के लिए, समझने के लिए. ज्योग्राफी में आप पीएचडी कर लीजिए, इट रियली डजंट मैटर, but you have to crack this exam. So the important part is that you have to focus on these small things. And I think pehle initial years mein even I didn't do that like small calculations, but yes, it matters a lot. Maybe sir, you practiced a lot more than the previous attempt which you gave. For answer writing की मैं बात कर रहा हूँ in the mains. तो सर आपने for example आपने एक दिन में, मतलब आप मेंस के पहले आप एक दिन में कितने टेस्ट पेपर्स लगा लेते? मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस बार एक भी मेंस के पेपर्स, टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए. मैंने बस आई मेड श्योर दैट माय स्पीड इज दैट आई कैन राइट 20 वर्ड्स इन अ मिनट. दैट इज माय Okay. टारगेट. आप देखिए, वही मेरा आइडिया है कि आप जब आप 2 मेंस लिख चुके हैं पहले, यू नो हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, यू फ्रेम अ आंसर. वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी दैट्स देयर इन योर माइंड. तो आप जब प्रैक्टिस इनिशियली कर रहे हैं, तो आपके पास कर करके वो फ्रेमवर्क आ जाएगा कि हाँ, पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा, देन अ बॉडी आएगी, फिर एक कंक्लूजन होगा. इंट्रोडक्शन में भी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इधर इट कैन बी अ स्टैटिस्टिक्स, और इट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, और यू कैन पुट अप सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैट क्वेश्चन. then you can proceed, right? So that is the whole idea. तो अब क्या है कि जब आप मेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बस द होल आइडिया शुड बी कि आप मिनिमम टाइम में 7 मिनट के अंदर आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं. अब जब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू राइट इन 7 to 8 मिनट्स, उससे ज्यादा एक्सीड मत करिए. बिकॉज आप बहुत सुंदर लिखने के चक्कर में 10 मिनट लगा देंगे, तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा एंड में. एंड अगर आपका एक क्वेश्चन छूट गया, देन 2-3 ऐसे क्वेश्चन छूट गए, देन यू आर रियली आउट ऑफ द रेस.
क्योंकि रेस जो है वो, अगर आप जो टॉपर है और जो लास्ट रैंकर है उसका मार्क्स का डिफरेंस देखेंगे, दैट विल कम आउट टू 60 to 80 मार्क्स का डिफरेंस। सो आप रेस के बाहर इंस्टेंट हो जाएंगे। 4 पेपर में अगर इफ यू लूज आउट 10 10 मार्क्स, देन यू आर गॉन। तो सर मतलब आपके ये बात से मैं एक और चीज भी यहाँ से ड्रॉ कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है मेंस में, तो वी कैन कांट बी परफेक्ट इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब यस। ये भी हो सकता है कि मतलब वी हैव टू राइट इन ऑन एन एवरेज बेसिस, एवरेज लिख के हमें वी हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट, एंड उतने ही लिमिटेड टाइम में वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द आंसर इन सच अ वे दैट इट लुक्स गुड टू द एग्जामिनर, इजंट इट सर? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये आपको करना ही है। मतलब अगर आप पेपर नहीं कंप्लीट कर रहे तो यू आर डूइंग ग्रेट डिसर्विस टू योरसेल्फ ओनली। तो ये तो सबसे प्राइमरी चीज है कि आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो अगर आप कितना भी नॉलेजेबल है, अगर आपने लिखा ही नहीं उसमें पेपर में, तो एग्जामिनर को पता ही कैसे लगेगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आपको एम ही करना है। Okay, sir. So I think we have discussed in details about prelims and mains and the answer writing strategy also. Sir, next मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा मेडिकल साइंस था। मेडिकल साइंस। तो सर उसके लिए तो यस। सिंस यू हैव बीन अ मेडिकल ग्रेजुएट, सर बेसिकली व्हाट मतलब कि आपने मेडिकल साइंस एज यू हैव डन एमबीबीएस, तो सर यही क्या आपका सोल मतलब रीजन था इसे एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का? मेरा मानना ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वो लीजिए जिसमें 3 चीजें आप देखिए। पहली चीज ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है उसको लेकर। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ विद दैट ऑप्शनल, देन गो फॉर इट। सेकंड, उसका मटेरियल है कि नहीं है मार्केट में। अगर उसका मटेरियल है और आपके पास मटेरियल आप जुगाड़ कर सकते हैं तो फिर गुड इनफ। अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं तो आप ऑप्शनल को करेंगे कैसे। और थर्ड है कि उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं। इफ द ऑप्शनल इज डूइंग गुड इन द रिसेंट टाइम्स, देन डेफिनेटली चूज फॉर इट। जिन लोगों का, जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपना ऑप्शनल नहीं ले पाते, या क्योंकि ग्रेजुएशन में मतलब इतना पढ़ाई करते भी नहीं है बहुत लोग। और इट्स डिफिकल्ट इन यूपीएससी कि आप पूरे लास्ट 4 साल का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट ले आए एंड यू परफॉर्म, इट्स डिफिकल्ट। तो मेरा मानना ये है कि दीज आर द 3 पैरामीटर्स जो आप लीजिए कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट ऑप्शनल, आपके पास मटेरियल है कि नहीं है। एंड थर्ड, आपने अगर उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, और मार्क्स कैसे आ रहे हैं उसमें, तो देन गो फॉर इट। सर एक पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल मेनी एस्पिरेंट्स दे टेक द पैरामीटर ऑफ द ओवरलैपिंग थिंग, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल किसी ने हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया है, सो ऐसा मतलब कहा जाता है कि दे डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट और मे बी द जीएस पार्ट बेसिकली। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग? I totally believe that yes, that's an advantage कि आपका आपने एक चीज ले लिया, अगर हिस्ट्री ले लिया तो आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से जीएस के लिए। बट मेरा मानना है कि यार मतलब ऑप्शनल इज अ वेरी मेजर फैक्टर। मतलब वो हिस्ट्री, जो जीएस का हिस्ट्री उतना ज्यादा हैवी नहीं है, यू कैन इजीली डू इट। स्पेक्ट्रम उठाइए, पढ़िए, हो जाएगा वैसे। बट ऑप्शनल इज समथिंग विच यू हैव टू स्कोर। अगर आप ऑप्शनल स्कोर नहीं कर रहे तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। और ऑप्शनल ग्रेजुएशन लेवल का आता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप जो भी ऑप्शन ले रहे हैं, इरेस्पेक्टिव, कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज व्हिच पीपल एम्प्लॉय। तो मेरा मानना है कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, गो फॉर इट। मेरा उसमें कोई ऐसा हार्ड ओपिनियन नहीं है कि आपको यही लेना चाहिए। बट यस, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, और अगर बाय गुड लक वो आपके उसके साथ भी मैच कर रहा है जीएस के सब्जेक्ट के साथ, तो वेरी गुड। आई थिंक दैट्स एन देन यू एडेड शुड गो फॉर इट। एडवांटेज, दैट्स एन एडेड दैट्स एन एडवांटेज। एडेड एडवांटेज। ओके सो सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सेशन में कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था यूपीएससी सिविल सर्विसेज? आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 इंटरव्यूज, अब देखते हैं क्या होता है आगे। ओके बट सर, सो यू आर इट्स अ गुड अगेन एक्सपीरियंस। अगेन सॉरी सर, यू आर ऑल अगेन अटेम्प्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन? Yeah, I wrote this Oh, year also. okay, okay. Let's see if I get a call, So are then you we'll go aspiring to. for maybe IAS or IPS? No, no, not IPS. I'm aspiring, I think, only for IAS.
I think that the service I have got is very good, and I have true respect for IPS. But somehow I have felt that the service I have got fits me very well. So I'm enjoying the service. और हाँ, आपका इंटरव्यू वाला सवाल, आई थिंक Yes. इंटरव्यू इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ पे आप जाते हैं. इट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग. 6-7 लोग बैठे रहते हैं, एक पैनल होता है, एंड देन यू गिव योर इंटरव्यू. मेरा मानना ये कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है. ये सभी बोलते हैं यस इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, बट यस यू हैव टू होन योर पर्सनालिटी. और वो होन कैसे होगा कि स्पेसिफिकली यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि वहां पे काफी हद तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है. मेरा मानना ये है कि हाँ, ethics, integrity, everything is there. I think everything, we give a lot of effort on ethics, integrity, and the subject competency, but communication skill is one place where we lack a lot. एंड वहां पे अगर आप थोड़ा वर्क करेंगे तो यू विल डू ग्रेट. और वो कम्युनिकेशन स्किल कैसे, इधर यू सी अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, खुद मिरर टॉकिंग करिए. इट हेल्प्स अ लॉट. अगर आप मिरर टॉकिंग कर रहे हैं अपने साथ, तो आपको पता लगेगा कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके डायलॉग डिलीवरी कैसी है, Body language also maybe. आप बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका पिच कैसा है, हाउ कॉन्फिडेंट यू लुक. देयर आर मेनी थिंग्स. जैसे आप बैठते भी उससे भी आपका कॉन्फिडेंस झलकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, अगर आप मैं ऐसे बैठता हूँ, आई लुक वेरी docile kind of a person. You don't want such docile people in services. So it's you have to be comfortable. आप आराम से बैठिए कि हाँ, whatever you're saying with confidence, even if you don't know, yes, you don't know, you can't know everything. So that that is how it should go. सर मतलब आपके जनरली जो क्वेश्चंस मतलब मुझे पता नहीं आपको कितना याद, में भी याद हो गई, तो आपके जनरली मतलब जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे, तो वो आपके किस चीज से रिलेटेड थे, वेदर इट वाज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और मे बी जनरल टॉपिक्स, या फिर रिलेटेड टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, किससे रिलेटेड थे? द इनिशियल इंटरव्यू जो मेरा था वो काफी हद तक मेरे बैकग्राउंड से रिलेट हुआ था, कि मैं कहाँ से आता हूँ एंड ऑल दोस क्वेश्चंस. फिर मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड वहां से रिलेट होते हुए आगे बढ़ा था. एंड जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपके आंसर्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. मतलब आपने कुछ आंसर दिया, उसके अबव दूसरा क्वेश्चन आता है लिंक कर करके. But second interview was very different. I was wearing a tie, and which was the slant tie, and उसमें क्या था कि और उस टाइम पे आई जस्ट केम अप फ्रॉम माय सीआरपीएफ अटैचमेंट, तो मेरे पास बिल्कुल जीरो वाला बाल वाला कंडीशन था, तो आई अच्छा, so हैड you were फुल गंजा already था in मैं. the, so you were already in the service at that time? Yeah, my second interview, that was Okay, okay. in my first interview I got clear. In my second interview I was already in my service. तो सीआरपीएफ अटैचमेंट के बाद आई केम फॉर द इंटरव्यू, और उसमें आई हैड अ वेरी क्लीन कट. सो दे आस्क्ड मी अबाउट आर यू इन सर्विस, एंड देन आई रिप्लाइड yes, and the entire thing began from there. So they asked me questions about whether bureaucrats are elites, is there equality in the society, and all questions which was related to equality. So my 20-25 minutes of interview was on equality. So you don't prepare for something like that. कि आप prepare करके नहीं जाते कि यार ऐसे सवाल के लिए. But the important part is, even if you're put in a very tough position, it's how you respond that matters. And I think अगर आपको कोई चीज लग रहा है, कोई opinion है, you can speak up for it. That is why I said that you don't have extreme opinions. Have a very central middle path opinion. और वो इसीलिए आप न्यूज़पेपर्स भी जब पढ़ रहे हैं, डोंट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, डोंट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, हैव अ मिडिल पाथ. ओके सर, सो आई थिंक ये है सर आपका आंसर किया. आई थिंक इट विल बी वेरी मच helpful to our viewers, because even many times I think the interviewers may ask you related to maybe some sort of political issues, so we have to give our answers basically in a very balanced manner, right? ट्रू ट्रू. So, so this was all about this session. So I hope the aspirants and the viewers of our channel will like this session. And thank you very much, sir, for the time. And in the next session, basically, we will talk about related to little bit about IRS and the cater allocation and all those stuff. So stay tuned and thank you. Thank you, sir. थैंक यू.